Hello everyone, myself Shubham Sable. I am from Hedged, and today we are going to discuss a very simple trading strategy, that is our bull call spread. So let me ask you first, like how many of you have heard about option chain and options or something like that? Yeah, so first of all, let me introduce myself Shubham Sable, and we will discussing a very simple strategy, that is bull cost spread. So मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको मेरा सब लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्लियरली? ओके, एंड मेरा स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो बुल कॉस्ट स्प्रेड और ये सब लाइक बैकग्राउंड एंड नोटपैड दैट आई एम शेयरिंग. ओके, so just say yes and no so that I can be sure कि like आपको मेरा आवाज भी सुनाई दे रहा है and the voice भी clear है and the screen भी आपको clear दिखाई दे रहा है, so I can continue with that. If you have any questions, like any queries, आप if you have that, just type the message and I can see like आपके अगर जो भी query होगी मैं आपको solve करने के लिए help करूंगा. Anything that comes in your mind, don't be free and like आप question पूछ सकते हैं, so don't worry about it. Okay, so let's start with the session then. Okay. So let me ask you for one question, like easily, like कितने लोगों ने आप में से बुल कॉल या बेयर पुट या समथिंग लाइक ऑप्शंस के बारे में सुना हुआ है? Okay, so first of all, I will start with the like simplest things. Like whenever you think like आपको आप सबको पता होगा कि मार्केट तीन ही डायरेक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम मूव होता है, लाइक अपसाइड में, डाउन साइड में या साइडवेज में. इधर व्हेन मार्केट मूव्स इन अपसाइड, वी बेसिकली लाइक ऑप्शंस में ऐसा होता है कि वी बेसिकली बाय कॉल ऑप्शन. सो इफ यू हैव अ बुलिश व्यू इन द मार्केट, वी ट्राई टू बाय अ कॉल ऑप्शन. सो बुलिश व्यू होता है, देन वी बाय कॉल ऑप्शन. And whenever we have bearish view, we mostly buy put option. So wherever we have bearish view, then we buy put option. So आप में से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे निफ्टी देखा है इन लास्ट फ्यू डेज और समथिंग लाइक दैट? ओके, सो सिंपल है कि क्या है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल है कि ये है कि इन विद इन लास्ट फ्यू डेज से मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड तरीके से मूव हो रहा है. एंड वेन एवर दिस थिंग्स हैपेंस, क्या होता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ब्रेकआउट देने का चांसेस काफी ज्यादा होता है कि ब्रेकआउट हो सके मार्केट में, या इधर अप और डाउन. वी कैन हैव एनी व्यूज. सो अगर आप निफ्टी का सिंपल चार्ट भी देखोगे कहीं भी जाके, तो एनी वेबसाइट इफ यू फॉलो, आप देखोगे कि वहां पे काफी ज्यादा मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट ट्रेड दिया है और वो काफी ज्यादा उधर ही 25,000 के रेंज में जो है वहां पे ट्रेड हो रहा है निफ्टी जो है. सो लेट मी जस्ट शो यू कि लाइक निफ्टी, सो निफ्टी यहाँ पे हम देखेंगे तो 25,000 के रेंज में ही सर्कुलेट हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ से जब हम देखेंगे कि आप देख ले सकते हैं कि काफी ज्यादा कंसोलिडेशन है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट देने का चांसेस ज्यादा रहता है इधर अप और डाउन साइड. सो वेन एवर वी ट्राई टू लाइक हैव दिस काइंड ऑफ व्यू लाइक मार्केट अपसाइड या डाउन साइड ट्रेंड में आ सकता है, सो वी ट्राई टू बाय इधर कॉल और पुट. बट प्रॉब्लम क्या होता है कॉल और पुट सिंपल बाय करने से, कि आप अगर सिंपल कॉल बाय कर रहे हैं तो इशू क्या होता है कि आप, मैं अगर लेट से ऑप्शन चेन में जाता हूँ और एक सिंपल कॉल बाय करता हूँ, लेट से कि मैं मार्केट 25,000 के आसपास है तो 25,200 कॉल में अगर बाय कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25,200 कॉल, जिसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है 101. सो 25,100 कॉल अगर आप सिंपल बाय करते हो, लेट से सिंपल है कि आप अगर आपका अगर व्यू है कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट ट्रेंड हो रहा है या अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है और आपको ऐसा फील होता है कि आप एक सिंपल बुट कॉल एक कॉल लेंगे, तो क्या होता है कि अगर लेट्स से हमने एक कॉल लिया है 5 सितंबर का एक्सपायरी है हमारा, यहाँ पे हम ऑप्शन चेन में देख भी सकते हैं कि 5 सितंबर का हमारा एक्सपायरी है, 5 सितंबर का एक्सपायरी, दैट इज, एंड वी आर ट्राइंग टू बाय अ बुल कॉल. सो 5 सितंबर का हम एक कॉल पहले पे करते हैं और सिंपल अगर हम कॉल बाय करते हैं तो क्या सिनारियो हो सकता है, लेट्स सी देखते हैं. सो अगर हम
25,200 कॉल जो हमने बाई किया है 101 पे। सो अगर लेट से कि आपने ये कॉल बाई किया है और लेट से मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है, मार्केट अगर आपसे अगेंस्ट जाता है, या फिर मार्केट का तीन व्यूज है, इधर मार्केट कैन गो अपसाइड, डाउनसाइड और साइडवेज. So any view that whenever you try to take, and if the market doesn't go in your favor, then at that time you are against, like you are going to lose the whole premium that you are. So basically option works in this way कि like it works like a movie ticket. Like आपके आप में से काफी लोगों ने मूवी गए होंगे, मूवी टिकट भी बाय किया होगा. सो आप मूवी टिकट बाय करते हैं लेट से, और आप अगर मूवी टिकट बाय करते हैं एंड आप अगर बाय करने के बाद अगर लेट से मूवी में नहीं जाते, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होता होगा? आप में से कोई बता सकता है मुझे कि क्या होता होगा मार्केट, अगर आप में से आपने अगर मूवी टिकट बाय किया है बट आप अगर मूवी को गए नहीं, तो आपको क्या रिफंड देगा? आपका जो आपने जहां से भी मूवी टिकट लिया है वहां से आप थिएटर आपको रिटर्न देगा. ओके, सो काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपका रिटर्न नहीं देगा. सो वैसे होता है ऑप्शन के साथ भी, कि आप अगर सिंपल अगर ऑप्शन बाय करते हैं एंड इफ द मार्केट डजंट गो इन योर फेवर एंड इट गोज अगेंस्ट यू, देन व्हाट एट दैट टाइम यू आर अबाउट टू लूज ऑल द प्रीमियम दैट यू हैव पेड. सो इट्स अ सिंपल लाइक थिंग, लाइक आप अगर कोई टिकट जैसे बाय करते हो और आप अगर उस चीज के लिए देखने गए नहीं, जैसे मूवी टिकट आप अगर बाय करते हो और आप अगर वो करने के लिए गए नहीं, तो मूवी देखने के लिए गए नहीं, तो आपको मूवी टिकट का लॉस हो जाएगा. और इफ लेट से कि आप अगर जाते हो, तो आपको एक एंटरटेनमेंट वैल्यू मिलता है, कुछ एक एंटरटेनमेंट मिलता है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू क्रिएट करता है अपने हमारे लिए. सो इन ऑप्शंस व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू बाय option and if the market doesn't go in your favor, then at that time what happens is that you are about to lose all the premium that you have paid until the expiry. Like we have explained here, like this is our expiry, and what we have done is we have bought. लेट्स से कि हमारा मार्केट का व्यू था कि मार्केट लेट्स से कि हमने देखा कि ये कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है काफी टाइम से, एंड आफ्टर दैट देयर माइट बी अ ब्रेकआउट इन अपसाइड डाउनसाइड, हमें पता नहीं, बट वी फील कि क्या होता है कि मार्केट में भी अपसाइड में ब्रेक होगा, ऐसा हमें लग रहा है. सो वी बाय 25,200 कॉल ऑप्शन. हमें लगता है कि 25,200 के ऊपर मार्केट जाएगा. सो इस हिसाब से हमने बाय किया है एक 25,200 का कॉल, जिसका प्राइस है 101 रुपीज. सो क्या होगा अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा नहीं, मार्केट अगर 25,200 जाता ही नहीं, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन विथ यू? Okay. So someone is saying like we are going to lose all the premium. Yeah, right. How much premium? Like we have paid a premium of 101 rupees. So what do you think, like how much premium we are going to lose? 101, correct, correct. So 101 rupees of premium that we are going to lose. So our max loss in this scenario will be 101 rupees into 25. That is our lot size of the Nifty. So 101 into 25, that comes around 25, 2525. So that is our maximum loss. So what happens is that if you are buying call option, it's a simple game, like it's a betting kind of thing. Like if you buy just on one option, then it's like a betting. So if the bet works in your favor, it will give you returns. But if the bet doesn't work in your favor, then you are going to lose all the money that you have paid for the bet. It's simple like that for single buying option. So if you're buying a call option or put option, if the market doesn't go in favor, so what happens is that you will lose all the premium that you have paid. So in this scenario, what we did is that we bought 25,200 call for 101 rupees. And in this scenario, what happened is that if the market doesn't go in favor, so let's say कि market आपका था निफ्टी जो था हमारा, यहाँ पे निफ्टी है हमारा, हमने कहाँ पे देखा था, निफ्टी was around 25,052. सो निफ्टी हमारा जो था वो 25,052 के पास था. एंड लेट्स से कि मार्केट आपका जो था यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 150 पॉइंट्स. सो अगर 150 पॉइंट्स अगर मार्केट मूव नहीं होता है आपके फेवर में, सो क्या होगा कि आपका पूरा प्रीमियम लूज हो जाएगा. एंड इन दैट सिनेरियो यू विल लूज ऑलमोस्ट 25 to like 2,525 rupees. That is a very huge loss for you.
So in order to save this loss, what we do is that we create different strategies. In these strategies, we what our goal is that we try to keep our whatever amount that we have paid to safeguard that premium, safeguard that amount. our हमारा जो पैसा हमारा दिया हुआ है वो हमारा सेफगार्ड करना है, and then at the same time we are trying to make some profit out of it as well. So that is our goal in this scenario. So what we are trying to do here is that we basically what we do is we try to buy a single call option, but when we do that, what happened is that we lost all the premium. But in this scenario, when we do is that we try to get some premium as well from the strategy, so we can gain some like we can reduce our maximum loss from the scenario as well. So यहाँ पे क्या होता है कि हम as an investor you have this view, like you should have this view, like before making any profit we should be able to save our whatever money we have, whatever capital we have. So capital safeguard is our main motive whenever we are trying to invest, because investing is a very difficult different condition. And what we do is that whenever we invest like whenever we trade blindly, we are about to lose like a huge amount of money. So in these scenarios, whenever we do any strategies, our main motive is that like we can safeguard our capital at max, at most we can do. And here in this strategy, this is a very simple strategy actually, so nothing big about it. What we try to do is here that we have paid some premium, like 101 rupees we have paid completely. But in this scenario we try to receive some premium as well, so in that, so that we can like reduce our maximum loss, we can reduce our maximum premium that we have paid. So what do you think what we should do? Like how many of you think like what we should do? Okay, some interesting answers. Okay. Yeah, yeah. Nice, nice. Yeah. So what we have done is that we thought that market will move up. So what we did is we bought a call option. Let's say our Nifty was around 25,052. So we try to buy some call option that is nearest to the market, nearest to our market. So we bought 25,200 call option for 101 rupees. Now what we had in mind is that we did not wanted to lose all that money. So in that scenario, we try to sell some or receive some premium in short. So in this, to safeguard our 101 rupees complete, in some amount, we try to gain some premium as well. So what we did is that we bought some 25,200 call option. So we tried to sell a OTM option, like sell OTM call option, to safeguard our premium, some amount of our premium. So that's given a very good answer, like sell OTM call. So let's say 25,200 कॉल है यहाँ पे. So आपको अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हो, so 25,200 कॉल ऑप्शन मैंने अगर बाय किया है, so what do you think, like what should be our OTM call that we should sell? Yeah, right. Correct. So 25, 300, 400, 500, anything that is farther from the market, so that we can receive some premium. Here 25, 300 call option is trading at 63 rupees. So we try to sell that option. So let's write it. Let's note it down. So 25, 200 call option हमने buy किया था. And what we did with, we sell at 25, 300 call option at what's the price? 63.5 rupees. So 63.5. So how many of you can tell me like what is the net premium that we have paid? Correct. Lots of intelligent people here, like lots of people who have done option trading, I think. So काफी लोगों को काफी correct answers पता है, ठीक है. So that is interesting, good thing actually. So क्या होता है कि आपने जो प्रीमियम पे किया है minus the premium that we have received is called as a net premium paid. So net
premium paid is, what we paid? We paid 101 rupees minus we received 63.5 rupees. So 37.5 rupees. That is our net premium paid. Now, net premium paid has a very interesting value. So we have paid actually. Earlier we were paying 101 rupees, but we received some premium like 63.5 rupees here as well. So we actually paid how much? 37.5 rupees. So if the market doesn't go in our favor, what do you think? How much will be our losses? Like what maximum amount of money am I going to lose here? Correct, correct, correct. Good. So lots of right answers. Actually, I was expecting this. So it's a very simple strategy. So it is expected actually. So I think you understand the strategy very well. So 37.5 is our net premium paid. So our maximum loss will be 37.5 rupees into 25. That is 937 rupees. So 37.5 into 25. That is 937.5 rupees. Okay, so earlier we were losing how much? So I will write here maximum loss if I was buying only a call option. That was 25 to 25, 2525. But here we reduced our loss significantly, right? So that is our maximum loss. And what do you think like our break even will be? How many of you can tell me like what is our break even here? Correct. Right, right. So simple rule is that like whenever we are trading same expiries and if the we are trading OPM options, so whatever our premium net premium paid is plus whatever the nearest strike to the market is, that is our break even usually. So that break even comes to like हमने यहाँ पे क्या किया था कि our break even, हमने नियरेस्ट स्ट्राइक कौन सा है, कोई बता सकता है? 25,200 plus 37.5 rupees, that comes around 25 to 37.5 rupees. That will be your break even. So whenever market moves above 25 to 37, we are going to make profit out of it. So this is our strategy. And what is our maximum profit? How many of you can tell me like what is our maximum profit? Okay, right, right. So maximum profit is the difference between our strike price. So we had bought 25,200 and we have sold 25,300. So the difference between these two strikes माइनस द प्रीमियम पेड, दैट प्रीमियम आपको वहां से रिसीव आप पे किया है तो आपको उतना प्रीमियम ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उसका प्रॉफिट होगा. सो दैट कम्स अराउंड 25,300 minus 25,200 minus 37.5 into 25. So 1562 will be our maximum profit. So यहाँ तक आपको क्लियर है? सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी. यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हमने इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सिंपल कॉल ऑप्शन we try to make a simple strategy so that our maximum loss or maximum premium that we have paid can be reduced. So that's why we basically generally give bull call strategy to reduce our like maximum losses. And here we have calculated our maximum profit, maximum loss, break even. So यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया है?
ओके परफेक्ट। सो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। ये स्ट्रेटेजी काफी सिंपल होता है। मोस्टली क्या होता है कि आप अगर कोई भी बुल कॉल लेते हो तो नियर बाय एक्सपायरी से ज्यादा बेटर होता है कि आपको थोड़ा सा दूर का एक्सपायरी लेंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम रिसीव भी होता है, ज्यादा प्रीमियम आपको पे भी करना पड़ता है ऑब्वियसली। बट इससे आपका प्रोबेबिलिटी जो होता है, टाइम लिमिट जो होता है आपका काफी बढ़ जाता है। सो मार्केट मूविंग इन योर फेवर गिव्स अस अ वेरी गुड चांस इफ वी आर लाइक ट्रेडिंग इन फादर strategies. And it is a very good strategy to understand options actually. When we try to understand option, whatever the basic strategies are very important in like nearer future when we are trying to do like very difficult strategies. So difficult strategies भी काफी सारे जो हमारी होती है वो एक combinations of different strategies के साथ बनती है। So advanced strategies भी काफी interesting तरीके से work करती है, but they still works on very basic concepts. So to understand कि like even advanced strategies like different strategies like this, to understand these kind of difficult like the difficult strategies like this, we have to understand simple strategies like bull call and bear put as well. So these is our basic strategies, and in our Hedged application we discuss these kind of strategies on our free trades. If you are connected with our free app, free group, you will also receive the strategy. You might have seen this strategy kind of strategies as well. So in our Hedged app, we try to give like within a one click, you can take the strategy. Like in if you are going to do this strategy on a manual basis, you have to buy a call option, then you have to sell a call option as well. So it is difficult to do this simultaneously. But what our Hedged app offer is that we can do this within one click. Like we can just click the buy order button, and then we can take the strategy completely. So, with this, I will be concluding my session for today. And if you have any doubt about it, you can just ask me. And if you are interested to stay connected with us, we will just give me your number and just type the number in the chat box, and I will forward it to our sales executive, so they can get back to you and connect with you. Okay, so thanks for joining with me. Thanks for being with me, and thanks for like being connected with our HDAP as well. We will come with this strategies like this as well in coming sessions as well. So stay connected with us, and I hope you will understand more great things about options and future trading in our next sessions as well. So thank you for being with me. Okay, bye. Have a nice day.